Okay, डबल ब्लॉक सिस्टम आज स्टार्ट करना है ना हमें. ओके, इट्स बेटर दैट मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, उससे फिर हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको आप लोग पहले सॉल्व करने का ट्राई करना, और उसके बाद आपको जितना समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा. बेसिकली डबल ब्लॉक कॉन्सेप्ट में होता है, व्हाट हैपेंस इन डबल ब्लॉक कॉन्सेप्ट. Up till now we were dealing with single blocks, okay, that a block is placed on a ground and external force F is applied on it, and so it's accelerating, calculate its acceleration and so on and so on. But now what I will do is I will start double block. In double block, two blocks are kept, okay, and one on the top of the other block. You can see here two blocks are there. If I'll say that the lower block is A block and the upper block is B block, or the vice versa, then you can easily relate. All right. Where is my okay? This is A block. This is B block, and both the blocks have some mass m. Let's say A block has mass m1, B block has some mass m2. Okay. And what is given here, that they have some friction coefficient mu. Okay, let's say that the friction coefficient between the surfaces of block A and B, it is mu1. Okay, mu1. And the friction coefficient between the surfaces of block B and ground, this is ground, okay, it is mu2. So both of them have different friction coefficient of friction, mu1 and mu2, and there is an external force F applied on the B block. So you have to tell what is the maximum force applied on the block M1. Okay, हमने इसमें M1 ऊपर वाले को ले लिया ना, कोई बात नहीं, इसको चेंज करके M2 कर लो. Okay, you can change this to M2 so that both the blocks move together. ठीक है, this you have to calculate. I'll give you a question for this, and let's just calculate with the help of that. एक क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करने का ट्राई करो. How will you, what will you try in this question? We did a question like this, if you remember. Yes, if we are applying a force, then what we have to balance. Yes, इस तरह क्वेश्चन हमने करे है ना, सिंगल ब्लॉक वाले करें, उसी को डबल ब्लॉक में लगाने का ट्राई करो कि फ्रिक्शन क्या कैसे लगता है, क्या एक्सेलरेशन होता है. इससे पहले मैं कह रहा था ना. यस, एग्जैक्टली सेम टाइप, इस तरह के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं. ओके, will you able to do this, और मैं एक और क्वेश्चन दूं. ओके, चलो मैं एक फ्रेश क्वेश्चन देता हूं. कुछ समझ में आया आपको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये वाले? नहीं तो आएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद आएगा. मेरे अकॉर्डिंग टू इट इज वेरी गुड टू लर्न विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन से साथ सीखोगे ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा. In the last class we solved a question. I hope that is clear to you. So I'll simply give a question. एक surface draw कर रहा हूँ. This is ground, okay, and on the ground a block is kept. Let the block of this block is of mass 2 kg, and on top of it another block is kept. इसका mass 1 kg है. दो block है, ठीक है. The lower block has mass 2 kg, upper block has mass 1 kg. Lower block, on the 2 kg block I am applying an external force F external. Okay, is applied, an external force F is applied. The friction coefficient between the two blocks, between the surfaces of the two blocks, okay, this let this be mu equal to 0.5, and the friction coefficient between the ground and 2 kg block. So this is also इसको स्मूथ ले लो. चलो, mu is equal to 0. There is no friction between the ground and the 2 kg block. So now if I say
that you have to calculate the maximum horizontal force for which both the blocks can move together. The question simply says find the maximum. You have to calculate the maximum value of external force. Maximum value of, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डबल ब्लॉक प्रॉब्लम में एक्सटर्नल फोर्स के. एक सरफेस मैंने आपको स्मूथ दिया है, वन सरफेस गिवन टू इज स्मूथ, म्यू इज इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट, that the surface is smooth, there is no friction present between the ground and 2 kg block. Find the maximum value of external force for which both the blocks move together. Okay, both blocks move together. G value is 10 meter per second square, which you have to take. Try to calculate external force applying on 2 kg. First of all, draw FBD. क्या करो, इनका FBD बना करके देखो. What all forces are acting on 2 kg block? What all forces are acting on 1 kg block? ठीक है, FBD ड्रॉ करके देखो कौन सी फोर्स उन पे एक्ट कर रही है और कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल मोशन के. ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा. ओके, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाई है तो एक्सेलरेशन भी कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो देखो कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करा सकती हैं. व्हिच फोर्सेस आर केपेबल ऑफ गिविंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन टू 1 kg ब्लॉक. आई विल गिव यू अ हिंट. देखो 1 मिनट लो, सोच के देखो, नहीं होगा तो आई विल हेल्प यू इन दिस, नथिंग टू वरी. I hope you guys are trying.
Okay, enough time for this. Okay, now I'll explain. Since there are no answers, don't worry. देखो बताता हूँ. How will you solve this? First of all, tell me that the external force are acting on 2 kg block. Okay, so the acceleration of the 2 kg block will be something in the horizontal direction. Acceleration 2 kg block in horizontal direction. ठीक है. Can you tell me which force is responsible for giving horizontal acceleration to 1 kg block? Can you identify कौन सी force होगी जो 1 kg वाले block को horizontal direction में acceleration दे सकती है? It's friction, obviously. It's friction. Okay. Okay. This is ground. क्या बनाता हूँ? This is ground. This block is of 2 kg. This block is of 1 kg. यहाँ पे F external लग रहा है. ठीक है. Since there is no friction present between ground and the 2 kg block, okay, the friction coefficient given to is 0. That is, the friction between the ground and 2 kg block is 0. Friction coefficient 0 means that the surface is smooth. There is no frictional force on the 2 kg block. Okay. But which force is responsible for acceleration of 1 kg block? It is friction. So friction force will be acting in which direction? Towards right on 1 kg block. Okay. 2 kg block will have an external force towards right, and the frictional force on the 1 kg block will also act in the right direction. Because if it won't act in the right direction, what will happen? The relative motion will happen and the 1 kg block will slip off. अगर फ्रिक्शन राइट साइड में नहीं लगेगा तो देखो क्या होगा. 2 kg वाला ब्लॉक तो राइट में खींच ही रहा है. अगर फ्रिक्शन 1 kg वाले ब्लॉक पे आप पीछे लगा देंगे या कहीं और लगा देंगे तो उससे क्या होगा, दोनों साथ में रह नहीं पाएंगे. और मैंने बोला कि फ्रिक्शन क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना चाहता है. ठीक है. तो अगर फ्रिक्शन 2 kg 1 kg के ब्लॉक को साथ में रखना चाहता है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? 1 kg पे, आगे की तरफ. क्योंकि 2 kg पे कहां लग रहा है फोर्स? राइट की तरफ आगे जा रहा है 2 kg ब्लॉक. राइट को मैंने पॉजिटिव बोल लिया. ठीक है. तो इफ 2 kg इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द 1 kg block will also be towards right, because if it's not towards right, then the 1 kg block will slip off and fall, and frictional force does not want that. Friction force want the 2 kg block and 1 kg block should move together. यहाँ पे लिखा भी है ना मैंने, they should move together. Okay, so frictional force should has some maximum value. Friction force, how do you calculate the value of friction force? Friction force की value निकालते हैं, mu times n. What is the mu value given to you? 0.5. So friction force maximum value will be, okay, someone is messaging me on Telegram, 0.5 into normal reaction. What is normal reaction? Mass of 1 kg block into 10 kg. The friction maximum value of frictional force is 5 Newton. Okay, so the maximum force on the 1 kg block is 5 Newton. 5 Newton force on the 1 kg block. How much acceleration it can produce? Frictional force is 5 Newton, and we know that the maximum value of friction force is 5 Newton. तो अब 5 Newton की friction force कितना acceleration produce करेगी 1 kg के block में? ये बताना कितना सिंपल है. Acceleration of 1 kg block due to this friction कितना होगा? Acceleration of 1 kg block is only because of frictional force. Frictional force is of 5 Newton, so acceleration will be nothing but 5 upon 1, which is 5 meter per second square. Oh, who is messaging me constantly? कौन message कर रहा है इतना? Let me just check.
जस्ट अ मिनट बेटा। Yeah. So the maximum force on the 1 kg maximum force on the 1 kg block is 5 Newton. How much acceleration it can produce? 5 meter per second square. Okay. Now we know that the maximum acceleration of 1 kg block is 5 meter per second square. Okay. So if you think logically, tell me if the acceleration of the whole system goes beyond 5 meter per second square, will they both move together? अगर 1 kg और 2 kg कंबाइंड ब्लॉक सिस्टम, इन दोनों ब्लॉक्स का कंबाइंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा हुआ, तो क्या ये लोग साथ में रह पाएंगे? Obvious answer is no. If the acceleration of the system of both 1 kg and 2 kg block goes beyond 5 meter per second, then they won't be able to stay together, because 2 kg block will move ahead with a greater acceleration and 1 kg block will slip and fall off. Okay. So the maximum acceleration for which the 1 kg and 2 kg block can move together is 5 meter per second. So this is the maximum acceleration. Maximum acceleration for which they can move together. Okay, done now. Now, if 5 meter per second square is the maximum acceleration of the system, and total mass of the system is, what is the total mass? 3 kg. Okay, if 3 kg is total mass of the system and the maximum acceleration of the system is 5 meter per second square, then mass into acceleration is what? Your maximum force, which is nothing but 5 into 3. समझ में आया? Did you guys understood? समझ में आया आप लोगों को? कुछ कुछ समझ में आया सर? स्मूथ सरफेस है तो मोशन अपोज कैसे करेगा? है? माइक ऑन करो, माइक ऑन करके पूछो। क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे आपका। माइक ऑन करो मलिनी। तेरी थी आवाज दिल तो मलिनी अच्छा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके ओके, मलिनी एंड दीपिका आर क्लियर। व्हाट अबाउट प्रसन्ना? शी इज द फर्स्ट वन टू join the class today. Can she be the first one to understand as well? जी मलिनी पूछिए, पूछो मलिनी। सर मतलब वो स्मूथ सरफेस होगा तो मतलब ऐसा फोर्स हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, वो अपने आप ऐसा मूवमेंट करेगा बॉडी। स्मूथ स्मूथ कहाँ पर दिया है मैंने? ग्राउंड और 2 kg ब्लॉक के बीच में। रुको ओपन बोर्ड खोलता हूँ। इसी डायग्राम में देख लो, इसी डायग्राम में बताओ मुझे। स्मूथ देखो मैंने किस किस के बीच में दिया है? 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक के बीच में दिया है। ओहो, अच्छा इसमें फ्रिक्शन लगा दिया ना। नेक्स्ट वही केस किया है मैंने। फ्रिक्शन 2 kg और 1 kg ब्लॉक के बीच में नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन किसके बीच में लग रहा है? 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक है, उनके बीच में कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ? 0.5। U is equals to 0.5 between 1 kg and 2 kg. ये जो फ्रिक्शन 1 kg ब्लॉक पे लग रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द सरफेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg। ये जो सरफेस है ना इनके बीच में, ये वाला, इसकी यहाँ पर फ्रिक्शन है, इसीलिए 1 kg ब्लॉक पे आगे फ्रिक्शन लग रहा है। ग्राउंड और 2 kg के ब्लॉक पे यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन। ओके,
इसीलिए मैंने 2 kg पे कहाँ फ्रिक्शन लगाया कुछ। मैंने आपको क्या बोला, Yes. 1 kg को आगे की तरफ कौन चलाएगा, राइट की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना मैक्सिमम लग सकता है, 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस हिसाब से तो टोटल 5 मीटर पर सेकेंड से दोनों को चलना पड़ेगा, 2 kg को और 1 kg को 5 मीटर पर सेकेंड चलना पड़ेगा, तभी जाकर के वो साथ में रहेंगे। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर हुआ तो 1 kg आगे निकल 2 kg आगे निकल जाएगा और 1 kg स्लिप ऑफ होकर गिर जाएगा। यही तो है ना कहानी। If the acceleration is Yes. more than 5 meter per second square, then the 2 kg block will move ahead, but the 1 kg block will slip off and fall because the maximum acceleration which 1 kg block can have is 5 meter per second square. समझ में आ गया आपको? अभी अभी भी नहीं क्लियर हो पा रहा है? नहीं, अभी समझ आ गया सर। ओके, वेरी गुड। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दूं? यस सर। लेट मी सी। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं। चलो, इसको लिखने से बजाय ना मैं इसको आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। This is a pulley. Okay, this is a table. This is a table. On the top of a table, two blocks are kept. Block of there's one block of M2 mass, the other block is of M3 mass, and from this pulley, another block of mass M1 is hanging. Okay, and the condition is condition. Listen carefully. What is the condition? Condition is that the mass of M1 is equal to mass of M2 is equal to the mass of M3. So all M1, M2, and M3, all the three blocks are having equal masses. ठीक है, mass तीनों का equal है. Okay. Now you can see that this table and the blocks M2 and M3, if I say that they have some friction coefficient mu, okay, the table is rough. Basically, the table and is rough. So the surface on which the M2 mass block and the M3 mass block are kept, that surface is rough, and there is some friction coefficient mu present. Okay, and the pulley is frictionless and also of negligible mass. Mass is frictionless pulley. You have to tell me what is the downward acceleration of mass m1. This is very obvious that the m1 mass is hanging, so it will be accelerating downwards. Why? Because m1g force will be acting downwards. So what is that downward acceleration of m1 that you have to calculate? Okay, the downward acceleration of mass m1. The question is pretty simple. I'll repeat. There is a system. Okay, it consists of three identical masses m1, m2, and m3, and they are all connected by a string which is passing over a pulley. Okay. Now, the mass m1 is hanging freely and the mass m2 and m3 are kept on a rough horizontal table. Do you understand why the rough? Rough means that the table has some friction. Okay. On the rough horizontal table, the pulley is frictionless and massless. Now you have to calculate what is the downward acceleration. नीचे जाते time m1 का कितना acceleration? Downward acceleration of mass m1. This is, I'll give you two more minutes. If you calculate this question, then we will calculate the answer. Then we will move ahead.
हाँ जी, no, 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 no. It's nothing like that. Time is important. I understand that, but uh, you can speak, Prasanna. There's nothing like that. What you can instead do is, if you think like your doubt will take more time of the class, just simply write in the chat, okay, I'll read it. If I say that it is going to take more time, then I will clearly say that this is going to take more time. So now you come in the Telegram chat. But if it's a simple doubt and I can explain in the class, then just why to wait for the Telegram chat? Okay, just write it down. By the way, quickly I will tell you how to solve this because nobody has given an answer. इसमें इतना परेशान क्यों जाते हो आप? छोटे छोटे सवाल हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं सर? पढ़ा है नहीं, फ्रिक्शन समझ आता नहीं, आप क्या पढ़ाते हो? परेशान ना हो तो क्या हो? सही बात है ना? देखो, I'll explain very simply what will happen in this case. बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा और यही आज का लास्ट टॉपिक है क्योंकि आई हैव अ मीटिंग बच्चों, तो आई विल लीव अ क्लास अ बिट अर्ली. चलो, first of all, tell me if the M1G force due to the mass of the M1 block is acting downwards, then there is a tension upwards in the string. Okay, attention T is upwards. That tension T is pulling both the blocks M2 towards the right side and M3 as well. Okay, since the table is rough, it has some friction, so the friction will be acting in the opposite direction towards backward side. Friction F3 on the uh, M3 block and friction F2 on the M2 block. Both the friction will be acting backwards. Why? Because the blocks are trying to move away from the table. Okay, pulley is trying to pull them towards right side, and if they are pulled towards right side, they will fall off the table. That friction does not want. Friction wants that the block should stay on the table. अब ये आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन ना लगानी आनी चाहिए कि फ्रिक्शन, मैंने आपको सिंपल बताया है. ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा 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 इंसान है, फ्रिक्शन दो लोगों को साथ में रखना चाहता है. अगर टेबल और ब्लॉक क्वेश्चन के शुरू होने से पहले एकदम साथ में थे तो एंड तक भी साथ में रहे. फ्रिक्शन ये चाहता. एग्जांपल दिया था ना, दो प्रेमियों वाला. Okay. Okay. Tell me what will be the value of friction force? How do you calculate value of friction force? F3 and F value of F3 and F2 will be same because mass is same. M2 and M3 are equal. What will be the value? Mu into mg. Okay, m1 m2 and m3, let all of them equal to the capital M. ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए. तो म्यू कैपिटल एम जी, ये होती है ना फ्रिक्शन की वैल्यू. म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन विल बी mg. तो म्यू mg दोनों के लिए सेम होगी. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. If this block is accelerating downwards, okay, the M1 block is accelerating downwards, and M2 and M3 on M2 and M3, a friction force is acting backwards. So what is the net force on the system of M1, M2 and M3? Net force on the system will be what? M1G minus 2 mu mg. Okay, m1g minus 2 mu mg. Basically this m1 is also equal to m. Okay, ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ. This m1 is also equal to m only. So this is mg minus 2 mu mg. This is the net force. What will the acceleration? Net acceleration will be, simply you divide this by the total mass of the system, which is 3m. That is your net acceleration. Now this is your net acceleration. And since M1, M2, and M3 were connected with a single string, with the same string, so all of them will have the same acceleration. So I was asking you the acceleration of the M1 block. Okay, but we have calculated the acceleration for the whole system. That is the same as the value of acceleration of the M1 block. So what will the acceleration? Mg minus 2 mu mg upon 3m. If you simplify this, it will be nothing but इट विल बी नथिंग बट मेरे टीचर ऐसे बोलते थे, तो मेरे को वहीं से आदत लग गई है. तो ना ऐसे मत सोचना,
मैं भी उनका मतलब उड़ाता था कि क्या बोलते हैं, पहले पूरा बताते हैं ये होगा, फिर बोलते हैं इट इज नथिंग बट। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने g कॉमन ले लिया, m कॉमन लेके मैंने कट कर दिया। Okay, this m will cancel out. If I'll take m common cancel out, then I've taken g common. So 1 minus 2 mu will remain inside the bracket and 3 is in the denominator. Acceleration will be g bracket in bracket 1 minus 2 mu by 3. Okay. Have you understood? Have you understood? जल्दी बोलो, हाँ या ना समझ में आया क्या? तीन तो बच्चे आते हैं, उसमें भी हाँ ना नहीं बोलते हैं, बताओ। मलिनी, दीपिका, अरे नहीं बोल तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ओके, प्रसन्न आई सेइंग यस 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 सर, लास्ट वाला, हाँ जल्दी बोलो, लास्ट वाला, जल्दी 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 जल्दी, माइक ऑन कर लो, फटाफट माइक ऑन कर लो, जो पूछना है। अरे रिपीट कर दो, माइक ऑन करो आप। मैंने बोला था 6:20 मुझे क्लास एंड करनी है, मेरी मीटिंग है। जल्दी माइक ऑन करो, फटाफट समझाऊंगा। अब स्पेसिफिकली बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज समझ में? हाँ, सवाल को मैंगो ना। अरे मलिनी मम्मी है वो? नहीं सर, वो सिस्टर को पढ़ा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, सर वो एक्सप्रेशन वाला वापस रिपीट करो ना। कौन से वाला बताओ, सर अब क्या समझ चीज? आया। अरे ऐसे कैसे, मैं पूछता हूँ तुम्हें समझ आ जाता है, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा था। देखो नेट फोर्स कितनी है सिस्टम पे, जो नीचे नीचे की तरफ सिस्टम को ले जा रही है, m1g। ठीक है, सिस्टम को पीछे की तरफ कौन खींच रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है? 2 म्यू m1g। तो नेट फोर्स कितनी होगी? m1g माइनस 2 म्यू m1g। m1g नीचे की तरफ ले जाना चाह रहा है, एक्सेलरेशन को कॉज कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन का कॉज कौन है? m1g। एक्सेलरेशन को अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। टोटल फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? 2 म्यू m1g। ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी हुई? m g माइनस 2 म्यू m g अपॉन टोटल, कितना मास है सिस्टम का, तो टोटल तो 3m, उससे डिवाइड कर दो कि नेट एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो m1 का एक्सेलरेशन, बिकॉज सिस्टम फॉर्म कर रखा है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसमें बताओ क्या समझ नहीं आया? सर वो फोर्स एक्सेलरेशन वो लिखा था ना, कंफ्यूज हो रहा था कौन सा वाला फोर्स है एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा अब आ गया ना? हाँ सर अब समझ आ गया। चलो ठीक है, सपना क्लास खत्म होने के बाद आपको क्लास में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।